So, Labdi, can you please let the recording get started? We'll just discuss something about. You can tell about yourself, Labdi, and yes, you can. The students maybe knowing want to know about that. Are you doing any internships or something like that? Okay, What's at your end actually? surely. So my name is Lapti Sheth and I'm a pre-final here computer science student. Currently, I am working as a tech analyst intern under Deutsche Bank. And my internship is actually ongoing, and that is why I had requested for the weekends. And except for that, if you want to know my interests outside study, because this whole session will be very academic, and outside it, then it will be like I like public speaking, dancing, and anchoring. So you might see me here and there doing a lot of things. So yep, that Well, is that's good, for Labdi. me. And at the end also, I'll share the links through which you can connect, which from which everyone can connect with me, and then we can connect and share more knowledge. Okay, okay. And today we will be having a webinar on digital image processing. So how long you are Yes. working on it, and can you please tell just a small introduction about it? Okay, so for digital image processing, I have been working under it since my second year of the college. And actually, one of our ma'am had introduced it to us. So she was working for a research paper, which was license plate recognition. And for that, she asked me if I wanted to be a part of it. And I said yes. And at that moment of time, I didn't have a lot of idea what digital image processing is. So she introduced to me the whole scenario of it, and then we learned about different segmentation and enhancement techniques. And thereafter, what did we do is that we came up with a project and an assignment on it. And thereafter, we had digital image processing as a elective in our college. So that intrigued and my interest for it. All right. So it's good that if the students get interacted with the teachers and the work the teachers are doing on any research paper or something like projects. So obviously it will be very much helpful for the students also in the coming future that if they want to work in that particular field or in that particular technology, so they will get a scope out of it. Definitely, definitely. So one of the mantra that I follow is that definitely you have to do a lot of projects, because at the end of the day, all the readings that we are doing, how do we implement that? So it's through the assignments or some kind of research or projects. And this map brought to me that thing. So you have to be out there in the market where teachers recognize the work that you are doing, and then they will come forward and will want to offer you some projects, and then you can uh, learn a lot of things. So it's not every time necessary that you should be knowing everything. Uh, Life is a learning journey, and so you will learn in the way. Yes, absolutely. And what about at your institute, Lovely? Is it going now for the students? I don't think so. And what about the No. online education? So as for now, presently we Online have classes our are going on. no, we have a summer vacation going on, and before that we Okay. had online classes. So we don't know what the next semester will bring in for us. Okay, okay. And what about the exams? How they used to conduct exams? Uh, I was not able to get you. I was talking about exams. Can you please I was repeat? talking about exams, Lovely. Yes, I was talking about exams. How did you conduct exams? So for the exam, it's a computer. We join into a meet, and then we have to keep our cameras and videos on in such a way that it is visible that we are writing. And it's a pen and paper test that we have to give, and then we upload it on uh, the Moodle that is given to us. And while the inspection is going on, so that is how we Okay, have okay. given our exams. Okay, we also used to have Moodle as an LMS,
But right now we are also working on the Google Meet, and then we used to share Google forms with the students. There we are having questions, and the student give the exams and they submit the form. So Okay, it's all about okay, MCQ thing. okay. Now we had that MCQ thing for one or two small tests, but then it was always a written test. Okay, okay. So Labdi, shall we start our presentation? Yeah, sure. So Okay, I just again share my welcome screen. you for yeah, just again welcome you for this session that you have shown the interest in giving a webinar on Gigzy Club. So yes, and today we are having a session on digital image processing. So thanks a Yes. lot, Labdi, again, and yes, you can have your presentation. Thank you so much for the introduction. So before doing any type of screen sharing, I would really like to interact with everybody, and then let's keep this as a interactive session so that we all enjoy this session. So as this topic that I'll be taking today is related to digital image processing, I wanted to know from your end what you mean by digital image processing. Anyone, you can either unmute or you can write in the chat, whatever is fine with you. Well, Labdi, if I talk from my side, that I used to take computer graphics and multimedia subjects in my semesters. So yes, something which I tell the students that it's something creating with the help of computers, means graphics and animations. That's what we do. That means creating images and Correct. all such things which we do. So that's a part of computer graphics from my side. Definitely. Anyone else? I see Manas has unmuted himself. Yeah. Do you wish to speak? Yes. So as per my understanding, I supposed to know that if image processing, like find out the logo of the image, or maybe the person who is wearing the t-shirt or shirt, the what is the brand of this logo. I think that maybe the image processing. Correct, correct. So now on screen share, I've got some amazing and perfect examples, but for those who didn't really get much, I'll I'll help you understand what does it mean. I just need a confirmation if my screen is visible to you guys. Yes, it is visible. Yes, it's visible. Yes. Yeah. Okay, thank you so much. So, what do you mean by digital image processing? So, we came up with two definitions, but let us break down the definition of digital image processing by the three words that we see here. So, digital. So, digital का मतलब क्या होता है? When you represent something in the form of zeros and ones. Because obviously this is digital, and who are we here to make understand the process that you have to do? So it's the computer who has to understand, right? And computer always understands in the terms of zeros and ones. So digital is zero and one. When we represent the zeros and ones in terms of intensities, and then when we represent it in a form of 2D structure, then it is called as image. And when we manipulate the image so as to process it or so as to get the important details out of it, then it is known as processing. So this is how we break down the definition of digital image processing. Okay, so again, now I would like to know from you, what do you think are the real world applications of digital image processing? Again, you can unmute and answer. It's a very simple thing. Image compression. Correct. So image compression is a method that we use in image processing. It is not the application, right? So image compression करके what do you get? What do you do after image compression? Okay, so I'll help you with this. A very simple example. जब हम लोग कोई भी post डालते हैं Instagram पे या Snapchat पे, so we add those filters, या फिर अगर पता चले कि pimple दिख रही है, so हम वो blemishes को हटाते हैं. So that can be a very simple example of real world applications of image processing. इसके अलावा I'm sure that you would have heard of the term computer vision. So computer vision is a whole different subject which is based on image processing. And
एक एग्जाम्पल जो हर जगह पे बहुत ज्यादा यूज होता है इस मेडिकल में। तो अगर मुझे कोई भी इमेज दे दे एंड उसमें से मुझे डिटेक्ट करना है कि इसमें कैंसर सेल्स प्रेजेंट है या नहीं, सो व्हाट डू आई डू, वो कैंसर सेल के शेप को मैं देखती हूँ, अगर वो शेप इज व्हाट कैंसर सेल्स शुड हैव, then I detect yes cancer is present, या फिर if there is a skeleton given और वो skeleton में crack है तो वो किस तरीके से पता चलता है। वो इमेज जो हम लोग निकालते हैं उसमें से हम लोग बाउंड्रीज को एनहांस करके we take out that boundary which shows the crack, right? So this is what real world applications of image processing is. Before we move forward, I would like you all to kindly download this app called Snapseed. This will be a very interesting way to show you what can be the other apps through which you can enhance your pictures and also to explain the concepts of image processing. So I would request you all to download it, and I will even share the name of the app. It is called Snapseed. Okay. So moving on. Now, these are a few images which hold a lot of significance in the history of image processing. अब ये वाला जो image है ना, वो telegraph पे लिया था. ये वाला image punch cards से लिया था. And this image is a result of infrared light. So as you can see the progress that image processing has done, the image acquisition thing is being doing, right? Now imagine telegraph को use करके would we have been able to take this spatial image? No, we wouldn't have been, right? अब नीचे की ये जो तीन images है, I guess I should stop sharing and just share again. Yes. Okay, I hope it is visible. Can you just acknowledge once more? Yes, it is visible Yes, now. it is. Thank you so much. So ये जो last के तीन images है, ये तीन images are the most widely used test images. अब interesting facts पे आते हैं. ये जो image है, this image is of a girl called Lena. ठीक है, और ये जो image जो लिया था was taken for the magazine called Playboy. And so you might be thinking कि Playboy magazine का image यहाँ पे क्यों है? It is because of the details that are present in the image and the different contrasts that we see. यहाँ पे if you see, so there are small feathers. ये color image देखेंगे तो it will be more clear. Then we have a very predominant object of a face that we are able to see. And फिर अलग-अलग tones पे जा रहे हैं. So this is wherever you will see an example of digital image processing code anyway, you will definitely see her picture. Then this is a picture of a cameraman. The 2D structure of this picture is 216 plus 216. And as you see in this picture, इसमें ये वाले पिक्चर से लेना वाले पिक्चर से कैमरामैन पिक्चर में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स है, right? But the interesting thing is कि इसकी जो intensities है lies within the range of 7 to 25, and then it lies from 190 to 110 to 190, right? So इतनी ही range में ये पूरी image बन गई with so much details. And this is a highly detailed image that you can see here. So जो बहुत complex image processing problems होते हैं, उसमें we use this image जैसे face detection के लिए. So इसमें इतना सारा details है that you have to. It is a very hard thing to detect the faces because of so many details. So these are some of the images that are really important for the whole image processing tasks and history. अब let us understand कि image processing के ideal steps क्या होते हैं. So as you can see, these are the boxes, and ये boxes में से थोड़े-थोड़े parts we'll be learning today, right? So first is image acquisition. Image acquisition क्या है? Is that I'm taking that image. So when I click a picture, वो picture का जो energy है वो मेरे sensors पे गिरता है. Once that falls on the sensors, वो सेंसर जो एनर्जी लेता है उसका एक कंटिन्यूस सिग्नल which is called the voltage, वो वोल्टेज में पास करता है. That is how I can get the image. This is how it works, right? The next thing is image filtering and enhancement. अब जैसे कि मैंने एक पिक्चर ले लिया, लेकिन वो पिक्चर में से I want to understand के
I want to blur the image or I want to sharpen the image. So how do I do that? I do that using image filtering and enhancement. अब जब वो इमेज के सारे डिटेल्स और अपीयरेंस को अगर मुझे बढ़ाना हो तो वो मैं कैसे करती हूँ? I do that using the image restoration. I restore its properties. कलर इमेज प्रोसेसिंग. सो कभी भी हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते. ऑल दैट वी सी इज कलर्स, राइट? एंड जब कलर के साथ हम लोग कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं तो इट कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ कलर इमेज प्रोसेसिंग, वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग. अब हम लोग कोई जैसे हम YouTube वीडियोस देखते हैं, राइट? सो वी गेट 360p, 480p, 720p. तो ये सारा जो है वो रेजोल्यूशन होता है. सिमिलरली इमेज हैज द रेजोल्यूशन. सो जितना ज्यादा मैं पिक्सेल्स बढ़ाती हूँ उतने ही ज्यादा मेरा रेजोल्यूशन होगा. दैट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेट्स. As compression, as one of the person mentioned during real life examples. So हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि हमारे पास एक वायर होती है जिसके थ्रू वी सेंड पैकेट्स फ्रॉम A to B, but we don't have infinite space, right? हम लोग के पास infinite bandwidth नहीं है. हमारे पास इतनों से ही bandwidth है जिसमें से we have to send a lot of things. So हम वो कैसे करते हैं? So in case of image processing and everywhere, it's commonly called as compression. And हम लोगों ने एक सीखा भी होगा. It is called Huffman encoding, right? Morphological processing. अब मैं जब इमेज मेरी निकाल रही हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगी, उसके लिए जो मुझे फीचर्स मिलेंगे are called as morphological processing. And thereafter segmentation. सेगमेंटेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इसमें क्या होता है कि मैं अपने पिक्सेल्स को सेग्रीगेट कर देती हूँ. जैसे इफ यू आर सीइंग माय स्क्रीन, सो यू कैन सी दिस इज मी, बिहाइंड मी आर कर्टन्स, रेस्ट इज द बैकग्राउंड, दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव सेगमेंटेड इट. देन रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन. रिप्रेजेंटेशन इज के मेरा जो भी इमेज है उसको मुझे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. डू आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ boundaries or regions? That can vary as per the applications that we have. And description is कि ये जो representation के लिए मुझे जो features चाहिए वो मैं description से लेती हूँ. And lastly, object recognition. This can be a very familiar term with everyone. So जैसे for example, क्योंकि you are seeing my screen, I mean the camera part of mine, ठीक है? And उसमें you want to go with face recognition. So this is the object that you are recognizing. Everything else is the background. So that is the result of object recognition. या फिर another example of it can be gesture recognition. अगर मैं ऐसे gesture दिखा रही हूँ, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं volume up कर रही हूँ, मैं volume down कर रही हूँ. So these are used in smartphone applications, right? So this can be example of object recognition. अब इसके बाद let us understand what sampling and quantization is. So हम लोगों ने इमेज को ले ली, लेकिन it is in a continuous, it is in an analog form. लेकिन मेरा कंप्यूटर किस भाषा में समझता है इमेज को? It understands the image in digital way. It understands the image in zeros and ones only, right? तो वो कैसे करेंगे? वो हम sampling and quantization के थ्रू करेंगे. सो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करने के वक्त हम लोग दो चीजों को ध्यान में रखते हैं. सो हमारी जो इमेज होगी, राइट, दैट इमेज कैन बी विजुअलाइज्ड इन कोऑर्डिनेट फॉर्म एंड उसमें कुछ एम्पलीट्यूड होगा. तो ये कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड जो वैल्यूज है, जब उसको मैं डिजिटाइज कर देती हूँ तो उसको सैम्पलिंग कहते हैं. एंड जब ये जो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मुझे मिली उसको मैं जब डिजिटाइज कर देती हूँ तो उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं, राइट? सो अगर मैं सैम्पलिंग का एग्जांपल दूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सेल्स मेरे 2 ही है, तो मुझे ये एक ब्लैक बॉक्स दिख रहा है. मैं ये ब्लैक बॉक्स से इन्फर क्या करूँगा? आई नॉट बी एबल टू इन्फर एनीथिंग. लेकिन मैं जब नंबर ऑफ पिक्सेल्स बढ़ाती जाती हूँ तो ठीक है, आई एम एबल टू सी सम ऑब्जेक्ट्स, राइट? जैसे ये पिज्जा वाला एग्जांपल हो गया. मेरा n is equal to 34 है, मतलब 34 plus 34, इट्स नॉट
it's a very pixelated image that I'm able to see here, right? But when I move forward to 102 or when I move forward to 304 या 192 में, तो मुझे एक high resolution clear image दिख रही है. Similarly for quantization, जैसे मैं यहाँ पे k के वैल्यूज बढ़ाती जा रही हूँ, मुझे ज्यादा कलर रेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मैं ज्यादा डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये पिज्जा वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये जो मेरा k की वैल्यू इसमें ब्लैक बॉक्स है, तो इससे मुझे कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे पिज्जा है. नो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ओ माय गॉड यहाँ पे पिज्जा एग्जिस्ट करता है. लेकिन जैसे ही मैं आगे आगे जा रही हूँ and I'm increasing the k values, यहाँ पे I'm seeing some pink thing. I might take it as a paint जो box में, but in while we move here, we understand कि that was not a pink paint, that was the shadow. And जैसे ही मैंने यहाँ पे range of intensities बढ़ा दी, I'm able to see the image ज़्यादा clearer, right? So this is what our example of quantization is. Now I will come back to you and I'll ask you that what do you think? How much resolution is necessary according to you? हर बार high resolution ही होना चाहिए? Is that the rule that we go forward with? I will come back to the screen and then I will interact with you. So yeah, you can go forward and answer. It should be high resolution that will get recognized more betterly from the image. Okay, okay, correct. Anyone else? Well, high resolution is okay if you need to see picture with more clarity. Okay, correct. So definitely that is the same way that even I think that high resolution is always wanted. लेकिन what if मैं have you heard of generative adversarial networks? So उसमें क्या होता है, हम एक कुछ भी रॉ वेक्टर को इनपुट करते हैं जो बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, एंड वो नॉइजी वेक्टर से वी जनरेट आवर ओन इमेज. So it is not always necessary कि मैं यहाँ पे जो GAN में जो इनपुट कर रही हूँ वो हमेशा बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला होगा. I am learning the thing, right? So what if, even this picture can be important to me, so as to understand what pixelated images to, so as to visualize what pixels look in real life. ये वाले image से मुझे नहीं पता चलेगा कि what do pixels mean in real life, but I'll be able to understand by this image. Shabby होते हैं, तो ऐसे भी इमेजेस को हम लोग लेते हैं, उनको एनहांस करते हैं, तो ऐसे रेजोल्यूशन भी काम आते हैं. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी वर्क इन द रियल वर्ल्ड लाइफ, वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज वांट हाई रेजोल्यूशन दैट प्लीजेस आवर आईज टू द बेस्ट. बट फॉर इमेज प्रोसेसिंग विल नॉट से कि मैं हमेशा आपसे हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज ही इनपुट दूंगा. नो, इट विल नॉट से लाइक दैट. इमेज प्रोसेसिंग हैज द कैपेसिटी टू you are doing. Now, before moving to the neighbors, let me help you understand what image looks in a real world life. Right? So I'm running this code, and I hope the code file is visible to you, right? And are you able to see an image on the screen, Lena image? No, Lovely, we are not able to see the screen. Okay, give me a You're minute. not presenting it, Labdi. Okay, I'll just present it again. There is an error. I'll reshare again. Or is it loading? Yes, it's visible now.
Okay, so this is the code that I'll be showing you. अब इसमें हम लोग देखेंगे how a image looks. So I'll rerun this, and so this is the Lena image that you can see over here, right? And these were the feathers that I was talking about. As well as अब वो image को मैंने बोला था that we are representing the image in form of a matrix. So this is the matrix that is visualized over here. लेकिन ये मैंने क्या किया है, मैंने एक इमेज को इनपुट लिया है, उसको मैंने ग्रे लेवल में डाला है, देन आई एम प्रिंटिंग द ग्रे स्केल लेवल. What if I want to show you the dimension of the actual image that I'm taking, right? So when I run this part, you will be able to see कि ये एक 3D image है because ये कलर मॉडल है. कलर मॉडल यूजेस RGB एंड RGB में क्या होता है कि वो 3D डायमेंशन में जाता है. It's RGB, so the three dimensions that we have, and that is how हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 3D के फॉर्म है, right? So this is how we are representing the image in form of pixels. We can even form an image. So जैसे ये वाला पोर्शन अगर मैं अनकमेंट करती हूँ and इसको मैं रन करती हूँ, right? So uh, you will be able to see this another screen जो अभी open हुई, जिसमें this portion is just gray and the rest of the portion is black, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया basically in the code कि हम लोगों ने एक 500 + 500 की इमेज ली एंड उसमें मैंने 0 to 256 एंड 0 to 256, मतलब ये जो मेरा 256 क्रॉस 256 वाला पैच है उसमें मैंने ग्रे का कलर कोडिंग डाल दिया, एंड दैट इज हाउ आई एम जनरेटिंग दिस इमेज, right? So these are the small fancy things that you can look forward to. And let us now move forward with the neighbors. तो जैसा हम लोगों ने देखा राइट कि मैंने एक इमेज बनाई और मैंने वो इमेज को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. नाउ इमेज में हमेशा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है इज द सेंटर पिक्सल, राइट? सो आई जस्ट वांट टू कंफर्म अगेन कि मेरी जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन है इज विजिबल टू यू. Yes, it is visible. Okay, thank you so much. So this is the center pixel. अभी center pixel में we have 4 neighbors, then we have 8 neighbors, and then we have diagonal neighbors. 4 neighbors are these things. So when this is my center pixel, x minus 1 y, x y plus 1, x plus 1 y, y minus 1, ये सारे मेरे 4 neighbors में होंगे. 8 neighbors में ये सब ही आ जाएंगे. And diagonal में it will come only this. So you might ask a question that Lovely, why is it important? Well, it is very important. सारे manipulation steps ये सारे के basis पे ही होता है. We consider the neighbors and we perform operations on neighbors, and then जो operation का result होता है वो हम लोग center pixel पे डालते हैं, right? So while we move ahead, I'll show you the examples of how are we actually using this thing. But this is what the concept of neighbors is. अब image enhancement की बात करते हैं, and उसके लिए I'll again stop sharing and I want you guys to open Snapseed app in your phone. I'll also open. अब image enhancement में there is this one method which is called as contrast stretching. So yeah, I guess I lost my connection, but I'm back, and I'll show you my phone, and then I'll show you what contrast stretching is. So जैसे this is the phone. अब यहाँ पे if you see, so this is a line which is generated, और ये ऐसा एक ग्राफ बन रहा है. Am I audible to you guys? Yes, you're audible. Actually, that's because of instability of the connection.
Yeah, am I audible now? Yes, yes, yes. Okay, so this is the image that you are seeing. अब contrast stretching में क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई भी एक point लेके अगर मैं उसको नीचे लेके जाऊंगी तो it will show me a dark image. और जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी it will show me a lighter image. तो contrast stretching में यही होता है, एक ग्राफ होता है अपना जिसको मैं इस तरीके से enhance करती जाती हूँ and like that I'm able to make the image darker or I'm able to get the image that I want. And this is the histogram that it shows. ये histogram basically is a tonal histogram, right? So हम यहाँ पे जो देखेंगे will always be a histogram of white and black and white intensities, but the one that we are seeing over here is of tones, the different tones that we have for the RGB color space. Right, so I'll move forward with the presentation and I'll present it again. Okay, so yeah, so हम लोगों ने ये contrast stretching वाली चीज देख ली, अब thresholding वाला चीज देखते हैं. So for thresholding what we are doing, जैसे ये मेरा ग्राफ होता है, उसमें मैंने एक threshold point को select कर दिया. वो threshold point के नीचे जितने भी points होंगे वो सारे zero होंगे and वो threshold point के ऊपर जितने भी points होंगे वो सारे के सारे 1 होंगे. So this is how we are doing thresholding and this is the example of thresholding. वो threshold के नीचे जितने भी points थे वो complete white है और जितने ऊपर थे वो complete black है, right? And the left part of the image that you are seeing is an example of grayscale or the contrast stretching that we have done on it. So ये image enhancement पे होता है. So हम लोगों ने वहाँ पे कैसे ग्राफ्स देखे थे, राइट? एंड वो ग्राफ्स में हम लोगों ने जो कर्व्स किए थे, तो हम लोग अलग अलग कर्व्स से भी एनहांसमेंट कर सकते हैं एंड वो अलग अलग कर्व nth रूट के साथ जाता है, nth पावर, राइट? ओके, या इट इज एवरीथिंग इज फाइन. फिर उसके बाद आता है बिट प्लेन स्लाइसिंग. सो अभी इसमें मैंने जिस तरह से बोला था, जो इमेज है उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस. ये जैसे जीरो है उसको आई एम रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 0 0. 1 को मैं 0 0 and 2 को 0 1 0, right? So this is how I am representing my image. अब ये image में जो मेरा ये वाला pixel है is called most significant bit. So this leftmost digit and the rightmost digit is known as least significant digit, right? So हम लोगों ने जिस तरह से देखा, हमारा जो इमेज का इंटेंसिटी है उसको मैं वैरी कर सकती हूँ फ्रॉम 0 to 255, राइट? सो 0 to 255 में मुझे मैक्सिमम कितनी बिट्स चाहिए होगी? 8 बिट्स. अब ये 8 बिट्स में आई विल हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड देन आई विल हैव द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड ये बिट्स के हिसाब से आई विल बी enhancing the image. So अभी इसमें इतना नहीं समझ आएगा, maybe when we'll move forward to the images you will get it, you will understand. So ये वाला जो पोर्शन है ये हमने सारे के सारे MSBs इसमें एक्सट्रैक्ट कर दिए. तो ये 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 एंड 1 1 0, तो ये 1 1 0 हो गया. फिर इसमें मिड वाले बिट्स है, so the mid bits that you will be able to see. So here was 0 0 1 0 1 1 1 0 0, right? And ये सारे least significant bits है which you are able to see over here. अब इसको मैं अगर इमेजेस से समझाऊं तो ये हमारी मेन इमेज है. जब मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को दिखाना चाहती हूँ तो ये सारे से डिटेल्स, माइनर डिटेल्स दिखाएगा, राइट? और ये मिड वाले बिट्स अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसी इमेज आएगी. एंड जब मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स दूँ तो वो मेरा जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है वो देगा. So this is how image enhancement works. So, do you guys have any doubts, Alvisa? Any doubts, or shall we continue?
Okay, I'm guessing there are no doubts. So we'll go forward and next we have image smoothing. अब जैसे मैंने एक इमेज देख ली एंड अभी इफ यू गाइस रियलाइज हम लोग पूरा ग्रे लेवल पे जा रहे हैं, हम लोग कुछ भी अभी कलर पे नहीं आए हैं, एवरीथिंग इज ग्रे. सो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इवन द पीपीटी दैट आई एम शोइंग यू पूरा ग्रे स्केल पे है, अभी कोई कलर नहीं, यू आर सीइंग ब्लैक ग्रे व्हाइट, राइट. सो दिस इज द कलर्स दैट यू आर सीइंग. अब स्मूथिंग हम लोग क्यों करते हैं? जैसे कि मेरी ये वाली इमेज हो गई, ये वाली इमेज में जब बहुत ज्यादा नॉइज होता है तो मुझे उसमें से हाउ डू आई एक्सट्रैक्ट द इमेज एंड वो नॉइज को मैं रिमूव. Yeah, so I'm doing that using image smoothing, right? So image smoothing में what am I doing is कि मैं normalize blur and median blur. These are the two blurring methods that we use, right? So I'm using these two methods जिससे I want to understand कि मैं अपने इमेज का पार्ट कैसे निकाल दूँ. तो normalize blur कैसे काम करता है? For normalize blur, what do we do is कि मैं एक कर्नल की साइज लेती हूँ, जैसे वो साइज ले लेती हूँ मैं 3x3, ठीक है. तो मैं इस इमेज को डिवाइड कर दूंगी, 3x3 इज 9, तो इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूंगी. फिर मैं तो व्हाट एम आई डूइंग इज मैं 1 डिवाइड बाय 9 कर रही हूँ, मैं 2 डिवाइड बाय 9 कर रही हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 9 कर रही हूँ, 9 डिवाइड बाय 9 कर रही हूँ. दिस इज ऑल दैट आई एम डूइंग, ठीक है. जो इस हिसाब से मैं डिवीजन कर रही हूँ उसका लेट्स से समेशन मेरा आया x. सो मैंने किया 1 डिवाइड बाय 9, 2 डिवाइड बाय 9, 3 डिवाइड बाय 9, 4 डिवाइड बाय 9 प्लस 12 डिवाइड बाय 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ सम करके मुझे एक आया सम एज x. अब ये जो x मुझे सम आया उसको मैं ये जो डायमेंशन ऑफ द इमेज है उससे डिवाइड करूँ. सो डायमेंशन ऑफ दिस इमेज इज अगेन 3. तो x डिवाइड बाय 9 करके जो मुझे y रिजल्ट आएगा, that result will be replaced by this 12. So as you did see, हम लोगों ने neighbors को use करके हम लोगों ने हमारे center pixel की value को change किया है smoothing करने के लिए, right? So that is what normalized blur is. अब अगर मुझे median blur करना है तो मैं median blur में किस तरीके से करूँगी? मैं पहले अपने pixel values को sort कर दूँगी. So it will be 1, then I'll have 2, 3, 4, 12, 9, then I'll have 12, and then I'll have 3 more numbers, right? So ये सब कुछ मेरा एक साइड पे, ये एक साइड पे, तो मेरा मीडियन क्या हुआ? My median is 9. So ये जो 9 है will be replaced by this center pixel. तो अब मेरी center pixel की वैल्यू हो जाएगी 9. राइट. सो अगर इसको वापस हम लोग समझे कोड से, लेट मी मूव फॉरवर्ड टू द कोड. सो कोड में मैं स्मूथिंग वाला पार्ट करती हूँ, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक इमेज को का इनपुट ले रही हूँ, उसको मैं शो करूंगी आपको एंड देन हम लोग उसको ब्लर करेंगे. तो जो फर्स्ट मेथड है cv2.blur इज यूजिंग द नॉर्मलाइज ब्लर मेथड एंड इसमें कर्नल साइज में 9 रख रही हूँ. And let's see क्या आता है इसका result, right? Yes, so I did run this and ये हम लोग का image आ रहा है. ये वाला image is the original image. ये वाला image is the blurred image that you are seeing, right? So don't worry, your vision is not blurred. We have actually blurred the image. अगर और देखना हो कि किस तरीके से ब्लर हो रहा है, लेट मी मेक द कर्नल साइज एज 20+20. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा एवरेजिंग कर रहे हैं. ज्यादा एवरेजिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, इमेज और ब्लर हो जाएगी. सो दिस इज ज्यादा ब्लर वाली इमेज एंड इसमें इफ यू सी वो ब्लर कर रहा है लेकिन इट इज नॉट कीपिंग द बाउंड्रीज इंटैक्ट. तो इसके वजह से वी गो फॉरवर्ड विद द idea of median blur. ये जो median blur है, it is a very good method to go forward with noise and pepper, salt and pepper noise जो हम लोग को आता है, right? So ये मैंने median blur किया and you will be able to see the difference, right?
So this is my original image and then this is the blurred image that I'm able to see. तो मैं जब भी median filter करूँगी तो मेरा जो boundary वाला part है वो हमेशा intact रहेगा with the median filter, right? So these were the two methods that we saw for blurring. Moving back, अच्छा, now you guys tell me कि मैंने सारे सेंटर पिक्सल्स को तो एनहांस कर दिया, लेकिन मेरे ये सारे जो बाउंड्री पिक्सल्स है, राइट, दीज बाउंड्री पिक्सल्स, इनको मैं किस तरह से एनहांस करूं? डू यू गाइस हैव एनी आइडिया फॉर इट? क्योंकि इस तरीके से तो मेरा सिर्फ सेंटर पोर्शन ऑफ द इमेज एनहांस होगा, साइड वाला नहीं होगा. सो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से कर सकते हैं? You can speak. I guess to enhance 9, we can use 3, 2, 12, 56, 16. 3 to 12. Okay. Okay. Any other idea? Okay. So let me help you understand this. अभी जैसे मुझे ये वाली इमेज को करना है, तो मैं क्या कर देती हूँ, ये इमेज के आजू बाजू मैं पैडिंग कर देती हूँ, राइट? ये जो पैडिंग होगी उसका जो वैल्यू होगा, we can keep that as the mean of all these 4 values या zeros. Let us take this as zeros. तो ये सारी जगह पे मैंने डाल दिया 0, ठीक है? अब मैं किस तरीके से, now this is one matrix that I have and 3 मेरा center pixel हो गया and उस हिसाब से मैं इसको enhance करूँ. So अब मेरा 3 center pixel हो गया, padding करने के बाद I am able to enhance even the side pixels. So this is one of the things that you can do. Now other thing comes image sharpening. अब मैंने इमेज में से ब्लरिंग करके नॉइज हटा दी, लेकिन व्हाट इफ मुझे किसी इमेज में सिर्फ और सिर्फ मेरे बाउंड्रीज दिखानी है, जैसे आई टोल्ड यू फॉर कैंसर सेल, मुझे अगर उसका जो बाउंड्री है वो ब्लर हो जाएगा, देन आई नॉट लाइक इट. आई वांट कि वो बाउंड्री मुझे दिखनी चाहिए, तो उसके लिए व्हाट डू आई डू शार्पनिंग. तो मैं क्या करूँगी, जो एजेस है उसको एनहांस करूँगी. So first let us understand this thing that you are able to see over here. इसमें क्या हो रहा है, ये इमेज में ये जो रेड लाइन है उसके थ्रू whatever values that I am getting, उसका एक इमेज इन लोगों ने बना दिया है, राइट? तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट जीरोस वैल्यूज है, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज व्हाई आई हैव 5 and 5 एंड ये वाला एक कांस्टेंट है. जैसे ही मैं व्हाइट से ब्लैक में आ रही हूँ, सो ऑलवेज रिमेम्बर 0 रिप्रेजेंट्स ब्लैक, 1 रिप्रेजेंट्स व्हाइट, ठीक है? तो हम जब भी व्हाट डू यू से व्हाइट थ्रू ब्लैक आएंगे तो हम लोग इंटेंसिटी घटा रहे हैं. हमने जैसे वो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग देखा, जैसे ग्राफ को नीचे ले जा रहे थे ग्राफ ब्लैक हो रहा था, जैसे ग्राफ को ऊपर लेके जा रहे थे ग्राफ व्हाइट हो रहा था, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, व्हाइट टू ब्लैक जा रही हूँ, इसकी वजह से मेरा एक रैंप आ गया, एक डाउनफॉल आ गया. उसके बाद कांस्टेंट है रैंप. Then I have this white speckle over here. तो वो एक isolated point को मैंने यहाँ पे represent किया है. फिर I have a flat segment. Again ये पूरा black है. फिर मुझे ये line आ रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं black to white जा रही हूँ, तो मैं intensity बढ़ा रही हूँ, right? So इसके वजह से ये बढ़ रहा है and ये जो thin line आ रही है अपनी यहाँ पे is represented over here. And then again the white to black are you, and then black to white are you. So this is the rest of the graph that you can see over here. अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसमें शार्पनिंग करने के लिए what do we do is कि हम लोग इमेज का डिफरेंशिएशन करते हैं. सो डिफरेंशिएशन के 2 मेथड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे. शार्पनिंग के लिए विल बी सीइंग मल्टीपल मेथड्स, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए विल बी सीइंग 2 मेथड्स. One is called first order derivative, and the second one is called second order derivative. So first order derivative में क्या होगा, जैसे ये मेरा ग्राफ है, राइट? ये ग्राफ में ये जितने भी कांस्टेंट लाइंस है वहां पे मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है? एंड ऑनसेट पॉइंट क्या होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, राइट? सो दिस इज द ऑनसेट पॉइंट ऑफ रैंप. हमने यहाँ पे देखा था, ये जो नीचे गिर रहा है उसको रैंप बोलते हैं, ये जो ऊपर बढ़ रहा है उसको स्टेप बोलते हैं.
सो ये रैंप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये जो स्टेप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, एंड जो रैंप्स होंगे उसके थ्रू भी हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इतना याद रखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट? लाइक दिस इज द ग्राफ दैट आई हैव। अब ये ग्राफ में मेरी इंटेंसिटी वैल्यूज आर गिवन ओवर हियर, राइट? अब ये इंटेंसिटी वैल्यूज में आई हैव टू डू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, मतलब ये मेरा 5 minus f of x, which is 5. 5 minus 5 is 0. 4 minus 5 is what? It is minus 1. 3 minus 4 is what? That is again minus 1. So इस हिसाब से we are just calculating the values, and this is the result that we get at the ending, right? Second order derivative का formula क्या है? f of x plus 1 plus f of x minus 1 minus 2 f of x, right? So जैसे मैं यहाँ पे second order के example में जाते हैं, so 2 into 5, so this is my f of x, so that is 10. 2 into 5 is 10. Then we have 4, and then we have 5. So I do 5 plus 4 is 9, minus 10 is minus 1. So इस हिसाब से मुझे minus 1 मिलता है. So अगर हम लोग इसका example देखें second order derivative का, so we are able to see कि इसमें जो onset point है and जो उसका end point है, दोनों non zero रह रहा है. First order derivative जो end point है वो भी zero हो जा रहा था, राइट? ये जो एंड पॉइंट है वो मेरा जीरो हो गया है यहाँ पे, लेकिन जब हम लोग इसकी बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, इफ यू सी तो ये नॉन जीरो है, while in the case of first order derivative it was zero, right? So this is how first order derivative and second order derivative works. Next filter that we use, हमने जो पहले देखा is we are differentiating the images, right? हम यहाँ पे जो कर रहे हैं is we'll be masking the filter on the image so as to perform sharpening. तो वो हम लोग किस तरह से कर रहे हैं? These are the Laplacian filters जो already available होते हैं, and I'll show you the code for it. It will make more sense. So ये मेरा sharpening वाला कोड है, जिसमें I'm using Laplacian filter, right? So मैंने मेरा ओरिजिनल इमेज लिया ये M&M वाला, एंड उसमें मैंने लाप्लाशियन फिल्टर किया जिसमें मैं बाउंड्रीज ढूंढ रही हूँ. सो दिस इज द एग्जांपल दैट आई एम गेटिंग, राइट? सो अब यहाँ पे जो वुड की भी जो बाउंड्रीज है ना, वो भी ये सब कुछ ले रहा है, एंड M&M की बाउंड्रीज है, इट इज इवन टेकिंग ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज हाउ लाप्लाशियन फिल्टर वर्क्स, राइट? सो विल मूव फॉरवर्ड. अब हमने वो जो M&M वाला इमेज देखा था, दैट वाज नॉट अ डिजायरेबल इमेज. हम लोग को वैसा इमेज कभी देखने में मजा नहीं आएगा. वो इमेज को देख के मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि इसमें से मुझे कौन सी बाउंड्री सही में चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ, मैं अनशार्प ऑपरेशन करती हूँ. तो अब इमेजिन करो कि मेरा एक इमेज है एंड दूसरा मेरा इमेज है जो बहुत ब्लरी है. तो मैं ओरिजिनल इमेज में से when I subtract the blurry image, what will I be left with? I'll be left with the boundaries, right? So the result that I get in that image will have only a good boundary. And वो boundary पे जब मैं कोई भी filter या masking operation कर देती हूँ, then it will give me a good result, right? So that is the unsharp operation. Okay, finally, I was way too bored to see the whole grayscale level thing, and finally we are with colors. So, any doubts up till now, or shall we move forward with the color fundamentals? You can even write in the chat box. No doubts, Labdi. Okay, great. So, abhi color fundamentals ke liye, there are three things that we keep in mind while performing the color fundamentals, right? First is radiance. अब हमने जिस तरह से देखा था, जब हम कोई भी इमेज को अक्वायर करते हैं तब उसमें हम उसकी एनर्जी
Am I? Yeah, I am back, I guess. Yes. So जो एनर्जी को हम लोग लेते हैं उसको रेडियंस बोलते हैं, right? And the energy that you will perceive and I will perceive will be different, right? So the energy perceived by the light source is known as luminance, and brightness is a very subjective thing. Brightness for you, brightness for other organisms can be different. So it is a achromatic notion, but it is not quantifiable, right? So I cannot measure brightness, but I can measure radiance and luminance. Like I can measure radiance on the basis of watts, right? So अब tell me a thing. What are the three primary colors that we have learned so far in our whole life? It's a very simple question. Okay. No one knows what three primary colors are. Red, blue, green. Correct, correct. So RGB, which is red, green, blue. These are the three primary colors. यही color के related सारे colors हैं. ये colors का जब मैं पूरा component zero कर देती हूँ तो black बन जाता है. जब मैं red, green, blue in equal proportions add करती हूँ तो वो white बन जाता है, right? So this is the color thing, which is RGB. अब ये R, G and B में मैं कैसे differentiate कर सकती हूँ? So I can differentiate on the basis of one, brightness. कि कितने color को मैं perceive कर पा रही हूँ, the achromatic notion that I told you. Other thing is hue. अब hue is how pure the light is, right? So अगर मैं जो red ले रही हूँ वो कितना intense red है, will tell me by hue. And saturation is कि हमने किसी भी color में कितना white color mix किया है, and that is called as saturation, right? So this is how we can differentiate between the colors. And you will be seeing there is cyan, there is magenta and there is yellow. तो जैसे RGB मॉडल होता है वैसे ही CMY मॉडल भी होता है. What is CMY model? Cyan, magenta, yellow. This is our CMY model. अब मुझे cyan क्या है? Cyan मेरा is a subtractive color of red. So let me show you by a very interesting example. Okay. Yeah. अब यहाँ पे जैसे मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाती हूँ, राइट? एंड ओके यहीं पे है. सो जैसे मैंने यहाँ पे मोर कलर्स में मैं गई कस्टम पे. जब मैं रेड का कंपोनेंट जो यहाँ पे 255 है उसको 0 कर देती हूँ तो आई विल गेट द साइन कलर, राइट? तो जब रेड ना हो एंड ग्रीन एंड ब्लू ही हो देन आई गेट साइन कलर. जब रेड को मैं 255 करके ब्लू को 0 कर देती हूँ देन आई गेट द येलो कलर. So this is how CMY works, right? And let's get back to our presentation. अब ये जो मॉडल है, this model I can represent it in this way. Origin is black, 255, 255, 255 is white. And rest if you see, red का opposite हमेशा cyan आएगा, blue के opposite हमेशा yellow आएगा, and green के opposite हमेशा magenta आएगा, right? This was the RGB model. अब ये जो RGB model है ना, वो हमेशा hardware options के लिए you will use. You will not use. Human perception is not RGB model. It is always and always the what do you say hardware options के लिए. So hue and saturation को अगर मैं मिला देती हूँ तो वो chromaticity बनता है. So chromaticity का भी एक model है, and this is the model that you are able to see here in the chromaticity diagram. इसमें क्या है, अगर मैं individual point से कोई भी दूसरे point में जा रही हूँ, so let me just erase all the ink on this side and okay, so I had used this ink earlier. So अगर मैं कोई भी white point से किसी भी point तक जा रही हूँ, right, like until here,
तो ये लाइन के बीच में जितने भी कलर्स आए वो सारे कलर्स कैन बी मेड बाय ग्रीन एंड व्हाइट। सिमिलरली कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स ले लेते हो, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ, ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आए विल बी कलर्स दैट दीज 2 पॉइंट्स विल मेक। सिमिलरली अगर जैसे यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना है, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसके अंदर जितने भी कलर्स होंगे will be made as a result of the 3 points of the triangle, right? But you are able to see कि यहाँ पे साइड में थोड़ी जगह बाकी रह रही है, and that is why I told you that this RGB model is only based on hardware options. It is not based for human perception, because in human perception it will not happen that we miss out on a few colors like this, right? So this is what chromaticity diagram is. Moving forward to the HSI model. अब ये जो HSI model है ना, this is the same okay. So hue क्या होता है? Hue is called the purity of color and saturation is how much मैं वो color में white mix कर रही हूँ. अब brightness, as I told you, वो एक what do you say, एक बहुत subjective thing है. So I might not be able to quantify it, but what will I be able to quantify is called as intensity. So that is why हमारा ये वाला जो RGB model था, right? इसका orientation मैंने अलग कर दिया. बस वो ओरिएंटेशन को मैंने इस हिसाब से कर दिया, एंड दिस इज व्हाट माय ह्यू लुक्स लाइक। एंड ये जो लाइन है ब्लैक टू व्हाइट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लाइन। अब यहाँ पे जैसे मैं ये वाले लाइन पे एक क्रॉस करती हूँ, देन दिस इज द शेप दैट आई विल बी एबल टू सी। ये शेप में कोई भी एंगल पे अगर मैं कोई भी एक लेंथ पे जाती हूँ तो वो लेंथ जो होगी विल टेल मी कि कितना सैचुरेटेड दैट कलर इज। एंड वो जो लाइन जो एंगल बनाएगा विथ रेड विल टेल मी व्हाट द ह्यू इज। ऑलराइट, एंड उसी हिसाब से ये जो पॉइंट जितना दूर होगा ऑन दिस इंटेंसिटी लाइन, जैसे दैट पॉइंट इज हियर, राइट? सो ये पॉइंट ब्लैक से कितना दूर है विल टेल मी द इंटेंसिटी, right? So now I'm able to quantify all the three things, and that is how we came up with the HSI model. And if you see यहाँ पे जितने भी primary and secondary colors है, ये सबके बीच का difference is 120, and primary and the subtractive color के बीच का difference is 60, right? So this is important. Okay, so now we are at image segmentation thing, and this is the last topic of this presentation. अब image segmentation में क्या होता है that मैंने image ले लिया, you are seeing me. How are you able to distinguish that this is a human sitting here and this is a background sitting there? It is the brain that we have जो वो कर पा रहा है, but computer किस तरीके से करता है? So it does using image segmentation. So image segmentation के दो methods होते हैं. One is a discontinuity based approach and other is a similarity based approach. So discontinuity based approach में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग filters use करते हैं जिससे मैं edges को निकाल सकूं. So moving back to the code that we have. Alright, so this is the code that we have. इसको मैं comment कर देती हूँ. And okay, so first filter that we'll be using is called the Sobel filter. इसके the filters that we use will have two components, one for the horizontal component, one for the vertical component. So for the horizontal component, this is the matrix that we'll be using, right? It is this is row wise, so it's a 1 2 1 0 0 0 minus 1 minus 2 minus 1. All right, उसी हिसाब से we have the array for the vertical filter, and then we apply Sobel filter on the image that we have taken over here, and we say let us see what is the result that we are getting. Okay. So as you can see, there are two images on your side. एक में you are able to see all these horizontal lines on the left part of the image. On the right part of the image,
image, you are able to see the vertical things. तो ये Sobel filter ने क्या किया है, उसने image को segment कर दिया है on the basis of the vertical lines and on the basis of the horizontal lines. अब मैं इन दोनों को भी club कर सकती हूँ so as to get one output, but so as to make you understand that how is it working for the vertical and horizontal edges, this is how it works, Sobel filter. So just remember this image that you are seeing for Sobel filter, and we'll move forward and we'll use another filter that we have, which is called Previtt filter, right? So ये filter को मैं जब run करती हूँ, and this is again the array. So ये filter में तो भी I'm able to visualize थोड़ा ज़्यादा than the previous thing. So if you can see here, this is again the horizontal and this is the vertical edges that they are giving me. Yeah, so this is everything. Moving ahead with Roberts filter. ये जो Roberts filter है, वो एक 2x2 ही है, right? So it's 1 minus. It should be, yep, not needed. So it is 1 0 and 0 minus 1. Okay. So जब हम लोग ये filter को run करते हैं, so this is Sobel thing, but I don't want this. Yeah, this is the Roberts picture that we are able to see. और Robert इस तरीके से image segmentation कर रहा है. But अभी अगर मैं real life में जाऊँ तो मुझे कभी भी ये सारी images के edges देख के I will not be able to picturize के okay wow I am getting the edges. No, it will never happen in your life. You are not able to picturize the edges. That is why there is a method, advanced method called canny edge detection, and for canny edge detection the output is really awesome. Yeah, so you are seeing the output. ये जो output है इसमें बहुत अच्छे से हम लोग को हमारी boundaries दिख रही हैं. Some of the places I am even able to see M. So canny edge detection is one of the method for that. Moving back to our presentation slide, another approach is similarity based approach. आप similarity कौन से basis पे कर सकते हो? तुम similarity region के basis पे, pixel के basis पे कर सकते हो. So what am I doing is कि मैं एक threshold value ले लेती हूँ, समझ लो जैसे 2 है. So what will I do? हमेशा center pixel से ही will move forward. And remember I told you that we were working for neighbors. So यहाँ अगर मैं 8 neighbors की बात करूँ तो मैं सारे के सारे नेबर्स में आई हैव टू सी कि ये सेंटर पिक्सल और वो नेबर का जो डिफरेंस है शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 2. सो 60 से यस, सो आई कैन टेक दिस थिंग. 64 नो, 59 यस, 70 नो, 67 नो, 65 नो, 59 यस. उस हिसाब से आई विल गो अहेड एंड आई विल सी फॉर 60. 60 से 10, 69, 64, 59. या तो इसी हिसाब से हम लोग इस हमारे जो पिक्सेल्स है उसको ग्रो करते जाते हैं. देन दिस इज कॉल्ड एज रीजन ग्रोइंग मेथड. रीजन स्प्लिट में हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे एक मैट्रिक्स में देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है. मैक्सिमम इज 7, मिनिमम इज 1, उसका डिफरेंस इज 6. Is it okay for the threshold? No, because the threshold is 6, is 2, and that is why हम लोग को threshold. Am I audible? Okay. So हमारी जो threshold की value है वो हमेशा 2 से कम या equal to 2 होनी चाहिए. And that is हम हमेशा इसको split करते जाते हैं. मैंने जब जैसे इसको split किया, so this is one region that I'm getting. For this region, maximum value is 7, minimum is 5. इसका difference is how much? इसका difference is 2, and then I can go forward with it. अगर ये वाला region है उसमें maximum value is 6, minimum value is 4, I can take this region. Yes, I can take this region. And this is how it comes to region splitting and merging method. Yep, this is it from my side, and thank you so much. Now I'm open to any questions that you have, so we can discuss upon that. Yes.
And I'll even share my GitHub link. I have entered all these materials that I have used on GitHub, and then you can go forward and check it out if you want to use it for your future basis. So this is the GitHub link for the same. Yes. So kindly let me know if there are any doubts or any reviews from your side for me. Students, if there are any question, you can unmute yourself and ask. I hope the session was interesting and it kept you intact on your place. Yes, absolutely. This session is very interactive, interesting, and you did all the things practically. That's very much important. So it's a hands-on session, actually. Thank you so Yes, much. yes. According to Sia and also myself, those who are just present in this session, definitely they will. They understood you explain each and every concept very clearly and very Yeah. in a stable way. And that means usually, as I told that I also used to teach CGMM. So Yeah. it's difficult for the students to know about the algorithms, how to design lines, and how to trace circle or something like that. So and the numericals which are based on that. And Correct. in this session you have used OpenCV, that is for Yeah. a Python library for to work on the images. Images, yes. So I hope the students who are interested in this particular section, so obviously they should look forward for that and then learn this particular thing, OpenCV. And there are lots and lots of concepts in OpenCV. OpenCV, definitely. The things that I have covered is just a little speckle of Yeah. what OpenCV can do. Yes, absolutely. So yes, I also used to work on that. So I guess on a daily basis there are certain problems which came up. For example, I just came about a problem that a student asked me that she said, "Sir, first we are having an image, then we need to convert in a grayscale." Then she told, "Sir, just we need only the outer tracing of that particular image, and then we just need to have only dots." For example, in kids' time, we used to connect the dots and we just trace the complete image. So similar problem she asked to me, "Sir, how to do this thing? Okay. We have given an image, convert it into dots so that it can be later on be connected to create a complete image." So Okay. she has been given a project like this. So this might be a part of image processing or segmentation, as you just told the concepts. So yes, and obviously we will use Yeah, OpenCV for that. Yeah. definitely. All right. So anyone from you can come up and say something. Sia, Saransh, Subhash, Piyush. You can ask something. Labdi, this session was great. You explained everything very well and you gave examples as well and you showed us by running the code also. So it was great learning. Thank you so much, Sia. Yeah. So I'll even be pasting my LinkedIn profile. If anyone wants to connect with me, they can head over there. And except for that, I have pasted the GitHub links, so you can find me over there also. Yes, absolutely. Yeah. So I just want to thank you again, Labdi, for this wonderful session, and Thank you so much. hopefully the students will connect you on both GitHub and LinkedIn. And if anyone is interested to work upon, since I suppose that this is DIP is somehow what research area. So, Yeah. so anyone who is interested to work upon this field, so sure. And right now, also as we are in a pandemic time, so everything is getting online. So, if you want to trace someone, that whether he or she has wear the mask, or you want to trace some objects or something like that. So obviously, this is a part of something research. So yes. Definitely is. It's a very amazing thing to work forward, and this majorly is
research oriented topic, right? So you can put your imagination to the level best and you can get that crux out of it. You can do whatever you wish to, like for as sir told that for the pandemic thing, industries immediately came up with mask detection, if they are wearing the mask or not, and from the expressions, like for the depression detection, by the expressions that you have, they can detect like if this person is depressed or not. So the ocean's all yours. It's how much you want to swim through it. Yes, absolutely. So I guess you are doing a wonderful work, Labdi, and Thank you so much. I wish you all the best for that. Your teacher is also guiding you really well, and Thank you. yes, hopefully you will definitely do some more kind of work in this, and you will just come up with some great ideas more. Surely, surely. All right. So thanks a lot again. Thanks a lot, people, for joining the session, for this wonderful session. And we all thanks for Lovely to be here and presented a webinar. And in coming time also, if anyone is having any issues or problems related to this particular topic, they can connect with her on GitHub and LinkedIn. Okay. So thank you again. Have a nice day. Please Thank take you care. so much for Yeah. having me. Take Yeah. care. Okay. Take care all. Take care.